So we will be discussing numericals based on integrated rate expression and half-life period now, students. Let's have a look at this question. The question says the rate constant for a first order reaction is 7 into 10 raised to minus 4 per second. Now when the question says the rate constant for the reaction, so अगर question में rate constant दिया हुआ है, say for example, so when I say rate constant, so can I say students rate constant is nothing but that is K. So K का वैल्यू दिया हुआ है 7 into 10 raised to minus 4 per second. If the initial concentration of the reactant is 0.080, initial concentration of the reactant meaning students it is C0, it is going to be 0.080 molar. So it is 0.080 molar. What concentration will remain after 35 minutes? That means they are giving you the time duration. Time duration is given to you and that is around 35 minutes. Right, और उन्होंने पूछा क्या है ultimately what concentration will be left behind. That means they are asking you to calculate the value of Ct. Now they say that this reaction is a first order reaction. So if the reaction is a first order reaction, students, can I say integrated rate expression for a first order reaction is K is equal to 2.303 upon T log C0 by Ct to the base 10, right? If you look at the value of K, the unit of K which is given to you is in second inverse, but the time duration which is given to you is in minutes. So you'll have to convert this time which is given to you in minutes into seconds. तो 35 minutes मतलब कितना seconds हो जाएगा? 35 into 60 हो जाएगा ना students? So the answer that you get in this case will be around 2100 seconds. Now if I substitute that value here, अगर मैंने ये value को substitute किया है students यहाँ पर, say in this case, so if I just substitute the value of K, if I just substitute the value, so K का value कितना दिया हुआ है students? The value of K which is given to you here students is around 7 into 10 raised to minus 4. So this is 7 into 10 raised to minus 4, which is equal to 2.303 upon टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है सर 2100 सेकेंड्स इनटू लॉग ऑफ सी नॉट का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स सी नॉट इज 0.080 अपॉन दिस वैल्यू विल बी सी टी टू द बेस 10, राइट. सो वी विल एक्चुअली कैलकुलेट लॉग ऑफ 0.080 अपॉन सी टी विच विल बी इक्वल टू 7 into 10 raised to minus 4 into 2100 अपॉन 2.303. अगर स्टूडेंट्स हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया ना, इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी अराउंड 0.6383. सो ये हो गया 0.6383. दिस इज लॉग ऑफ 0.080 अपॉन सी टी. सो इफ दिस लॉग गोज ऑन द अदर साइड दिस बिकम्स एंटी लॉग. तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 0.080 अपॉन सी टी विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6383, राइट. अगर मैंने एंटी लॉग ऑफ 0.6383 निकाला स्टूडेंट्स, तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी अराउंड 4.35. तो 4.35 इज नथिंग बट इट इज 0.080 अपॉन सी टी. सो कैन वी एक्चुअली गेट द वैल्यू ऑफ सी टी स्टूडेंट्स? तो सी टी क्या रहेगा सर? सी टी विल बी 0.08 upon 4.35. If we just calculate this value students, the value turns out to be 0.0184 molar. Calculations you can check students, I'm not doing the calculations here. I hope you guys very clear with this numerical. Let's move to the next numerical students. If you check the next numerical, अगला numerical अगर check करने के लिए जा रहे हैं students, so the next numerical if you check is like this. The question is the half-life of a first order reaction is 6 hours. So if they give you the half-life, right, so half-life matlab they have basically given you T half. So half-life of a reaction is 6 hours and they are also saying that it's a first order reaction. How long will it take for the concentration of the reactant to decrease from, so the concentration of the reactant decreases from 0.8 molar. So can I say initial concentration will be 0.8,
and amount left will be 0.25. How long will it take? Meaning they're actually asking you to find out the time duration which will be required. अगर उन्होंने ऐसे पूछा है स्टूडेंट्स टाइम ड्यूरेशन टी पूछा हुआ है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? कैन ऐसे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है सर? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग C0 बाय सी टी टू द बेस 10. बट इसमें अगर हम लोग देखने जाएगा तो सर दो अननोन्स है ना. कौन से दो अननोन है? एक तो टाइम ड्यूरेशन वी डोंट नो, अनदर वन इज के. तो आई विल फाइंड आउट के बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, राइट? आई होप यू ऑल रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमको पता है स्टूडेंट्स दैट टी हाफ इज नथिंग बट इट इज 0.693 बाय के. So if T half is 0.693 upon K students, so what is K? Sir, K will be 0.693 upon T half. Can I substitute that here? तो टाइम अगर मैं निकालने के लिए जाऊंगा स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर K है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? द प्लेस वेयर वी हैव K, वी कैन राइट इट एज 0.693 बाय T half is equal to 2.303 upon T log C0 by Ct to the base 10. So in this case T क्या हो जाएगा? T इस तरफ आ गया, so this will become 2.303 into T half, right? What I'll do is students, I'll just substitute the values. Okay, सीधा value substitute कर देते हैं. So this is 2.303 into what is the value of T half which is given to you? Can I say that is 6 hours upon, so 2.303 into 6 upon, just a second, I'll just make a proper line, upon, जाने दो ऐसे ही बनने वाले लगते हैं, upon, this will be, this is going here, so 0.693 will come in the denominator students. So this is like 0.693 into log of C0 का वैल्यू कितना दिया सर? 0.8 दिया है. इसका वैल्यू कितना दिया? 0.25. कैन वी कैलकुलेट दिस स्टूडेंट्स? सो कैलकुलेट कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज यस सर, इट कैन बी डन. इसको सॉल्व करेगा तो दिस विल बिकम 3.2. मतलब दिस वैल्यू इफ वी जस्ट गो ऑन टू सॉल्व दिस बिकम्स 3.2 एंड लॉग 3.2 निकाल के सब सॉल्व करेगा स्टूडेंट्स, द आंसर दैट विल बी गेटिंग विल बी अराउंड 10.07 आवर्स. दिस इज द टाइम ड्यूरेशन. तो व्हाट इज द टाइम टेकन सर? इट इज 10.07, राइट. उसका लॉजिक ऐसा भी निकाल सकता है स्टूडेंट्स, ये 0.8 है ना, 0.8 का हाफ कितना है? 0.4 है. तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, राइट, इज 6 आवर्स. 0.8 से 0.4 से उसका हाफ कितना रहेगा? 0.2. तो टोटल 12 आवर्स रहेगा ना. द आंसर विल बी क्लोज टू 12. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट स्टूडेंट्स, right? Then comes the next question students. The question says, in a first order reaction A giving you B, 60% of the given sample of the compound decomposes in 45 minutes. What is the half life of the reaction? तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं 60% of the given sample of the compound decomposes, मतलब कहना है 60% of the compound has actually reacted. So if 60% of the compound has reacted students, तो amount बचेगा कितना? I hope you understand students, amount left will be 40%, right? So in this case, what will be initial concentration of the reactant? Can I say 100? So what will be the amount left? If 60% has reacted, meaning amount left will be 40%. बराबर है. And उसको time कितना लग रहा है students for this particular thing to undergo decomposition? The time period which this particular thing is taking place is in 45 minutes. Right, and they're asking you to calculate the half life of the reaction. Half life पूछा मतलब T half पूछा ना. So how can we calculate T half for this question? T half पूछे. Now question is, I mean formula क्या है T half का? Sir, we know T half is 0.693 by K. मतलब ये क्वेश्चन में पहले क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पहला K निकालना पड़ेगा and then we can get the value for T half, or else we can substitute it directly. So T half is 0.693 by K, या फिर K क्या रहेगा? 0.693 by T half. What is our integrated rate expression? सर रेट एक्सप्रेशन है K is equal to 2.303 upon T log C0 by Ct
टू द बेस 10। के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 0.693 बाई टी हाफ, राइट। सो के बदले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 0.693 बाय टी हाफ विच इज़ इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ C0 by Ct to the base 10. Question is students, do we know the values? इधर पे जो values है हमको values पता है कि नहीं पता है स्टूडेंट्स? ये तो इतना ही रहेगा। टी हाफ पूछा हुआ है, ये टाइम पीरियड का ड्यूरेशन कितना दिया है सर? 45 मिनट्स दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नॉट? सर सी नॉट का वैल्यू 100, सी टी का वैल्यू कितना है? 40। कैन यू सब्सटीट्यूट एंड गेट द वैल्यू फॉर टाइम स्टूडेंट्स? कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। द टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन will be 34 minutes.